गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग चेतन, तरुण, गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी, आई शुड से गुड आफ्टरनून। एंड जानवी, रितु, निकिता, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिट्टू, वंदना, भरत, राज विश्वास, सौम्य रंजन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली last time the session was in morning, so practice is good saying good morning. Okay, so today we are here to start the subject law, business law. Okay, and this is the most interesting subject and most earning subject because फीस कब मिलेगी? जब आप लॉ की जानकारी होगी। अगर लॉ की जानकारी नहीं है तो कोई आपसे राय नहीं लेगा, राय नहीं लेगा तो फीस नहीं देगा। तो मोस्ट अर्निंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट इज द लॉ। ठीक है। एंड गुड आफ्टरनून रत्निशा, श्रेया, हरसिमरन, गुड आफ्टरनून जयेश, कशेश, अनन्या, मिस आर, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद सरफराज, दीपाली, प्रियंका, आयुषी, नव्या, शिवम, किशन, बिट्टू, प्रतिभा, वेरी गुड आफ्टरनून। आरपी शाह, गौरव, आदर्श्री, अंकिता, मिसेस कुमारी, अनुष्का, आशीष, साक्षी, श्रेया, तेजस, वारे वाह, प्रसन्नता, गुफरान, काजी, अमित कुमार, अक्षरा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अमन, नेगी, महावीर भाई जैन, तन्वी, अंशिका, यश, आशुतोष, सुजल, शिवम, बालाजी, शिवम, everyone, each and everyone, good afternoon from my side. Myself, CA Sudeep Kumar Jain, and I'm here to discuss, to share my experience, my knowledge on the topic Indian Contract Act. So, what is the Indian Contract Act? But before, I should discuss about the subject, about the pattern, किस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा. I will use both language, Hindi and English. I just repeat what in Hindi, what I will give, I will deliberate in English. जो भी मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा उसी का रिपीट मैं हिंदी में करूंगा. तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर हिंदी में बोलिए कि इंग्लिश में बोलिए. डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है. Second, next 10 lectures are for Indian Contract Act, and in the last lecture I will discuss the presentation, how to present the answers in your examination hall. उस पर चर्चा करेंगे. And first of all, you should be proud of yourself because you are going to be the most important person for a businessman. You are going to be a chartered accountant. कोई भी बिजनेस हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस तो बहुत जरूरी है. तो इसलिए फील करो कि हाँ सर, वी आर गोइंग to complete that course which is most awaited, I think most important for economy. So Ritu is saying sir subject is difficult. Okay Ritu, note my words. After 10 days, 10 lectures of law, you tell me if it is easy or tough subject. ठीक है. Good morning, Sadhana sir. This is first class with you. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hello everyone. Good afternoon. यार this is not possible ना कि मैं सबके नाम ले पाऊँ. Please mind मत करना यार दोस्तों, क्योंकि पता है ना, अगर मैं नाम लूंगा ना, इतने लोग हैं ना, तो पता लेक्चर 2 घंटे निकल गए, समझ में कुछ नहीं आएगा ही नहीं. So let's start. So be smile and start the most interesting topic, Indian Contract Act. ठीक है. So first important thing, the elevator to success is out of order and you will have to use the stairs.
one step at a time, and this is the first step, that is CA foundation. So don't bother about what will be the in final, what will be in CA इंटर. सर फाइनल में तो बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, इंटर में ज्यादा कम होती है, या इंटर में ज्यादा होती है, फाइनल सब इग्नोर करो यार, पहले फाउंडेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब फाउंडेशन होगा तो आगे होगा। क्लास 4 भी तो आपने जब की थी, जब आपने थर्ड पास कर ली थी, तो जस्ट इग्नोर व्हाट वाज इन फाइनल। समवन से सर फाइनल में तो बहुत बुक्स होती है। अरे भाई नॉलेज आएगी जब भी तो काम बढ़ेगा आगे, तभी तो इज्जत बनेगी आपकी, ठीक है ना। हाँ ये यही बात। मिस्टर राज विश्वास सर, वी विल बिकम सीए ऑन वन डे, डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू, यू ऑल ऑफ विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट वन डे। ठीक है, अभी सारी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आई विल रिप्लाई ऑल द प्रॉब्लम्स, so don't worry, let's start. And what is the syrup for success? What is the syrup for success in your exam? Just the syrup. You have to say yourself, one day I will be a chartered accountant. And this syrup you have to be taken 3 times a day. And definitely you will be a chartered accountant. This is syrup. Please ये रिपीट करना बच्चों, दिस हमें डेली ये सीरप को 3 बार लेना है आपको, और ये अपने बस अपने आप से कहना हाथ बंद करके, यस आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू विल गेट द एनर्जी टू स्टडी, यू विल गेट योर टारगेट्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। someone is saying the law have many sections, the law is a very big course, very big syllabus. So someone says the law is like a dinosaur, but my view is something different. Law is not like dinosaur. Law is dinosaur, but not like the hunting dinosaur, the friendly dinosaur. This is the friendly dinosaur. So start the journey with me, CA सुदीप कुमार जैन। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। पहली बात, पहले हम देखते हैं, we should see what is the coverage of your of the law in your exam. So business law is basically of 60 marks, ठीक है, and in 60 marks there are 5 acts: Indian Contract Act, Sale of Good Act 1930, Indian Partnership Act 1932, Companies Act 2013, LLP 2008, right? This is sure that there will be the coverage of total 60 marks of business law, but from which act, what is the coverage, it is not mentioned. It is not mentioned by the ICA. किसी में से कितना आ सकता है, but as per the trend, because the Indian contract is big, so it will be about, as per my opinion, about 15 to 20 marks from Indian Contract Act, about 10 marks, 8 to 10 marks in Sale of Good Act, Indian Partnership Act, and Companies Act, and 1 question from LLP. I will discuss. And in exam, the 3 types of questions are asked. First are objective, and it will be true false type. It will be a correct incorrect, and that will be very low coverage. I think there will be 2 or 3 questions, maybe, or may not be. हो सकता है ना, but direct question, practical problem will be there. And the proportion is about, I think it will be 50-50%. Direct question, what is the direct question? What is the practical problem? So direct question is like that, what do you mean by so and so? What are the types of so and so? This is a direct question. Descriptive question, so there will be a practical problem before you, and you have to apply the law on that problem and give the answer. आपको law apply करना है और उसका आंसर देना है कि डिसीजन क्या होगा, ठीक है। Just like that कि I'm not discussing the problem, I'm just taking the example. What I'm not discussing the answer, I'm discussing the problem. किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आने वाला है। तो ये बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल, शंभू दयाल started self-service system in his shop. Srimati Prakash entered the shop, took a basket, and after taking articles of her choice into the basket, reached the cashier for payment. And the cashier refuses to accept the price.
can Shambhu Dayal be compelled to sell the said article to Srimati Prakash, decide as per the provisions of Indian contract? So how to answer that question? So that will be discussed. I will discuss in the 10th lecture. जब हमारा कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, वो मैं आपको डिस्कस करूँ. ठीक है. तो 9th लेक्चर तक प्लीज ये मत क्वेश्चन करना सर कैसे लिखना है एग्जाम में, क्या करना है, वो मैं सब बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए. मेरी ड्यूटी है, मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप में से हर बच्चा सीए बने. और मेरे साथ हमारी जो टीम है फैकल्टी की, सबने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि आप लोगों को सीए बनाना है कैसे. तो फिर चिंता छोड़ो मेरे ऊपर, ये लॉ में कैसे प्रेजेंट करना है आई विल डिस्कस. ठीक है. ये मैंने पेपर लिया हुआ है. दिस इज द पेपर इन दैट वाज आस्क्ड इन जुलाई 2022 जस्ट टू शेयर द हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो सी सेक्शन A is for mercantile law. Section A says question 1 is compulsory and answer any 4 questions out of the remaining 5 questions. It means you have the choice of 1 question. So there will be 6 questions. Each will be of 12 marks. You have to attempt 5, in which first is compulsory. So each question of almost 12 marks, and there will be part of that question. For example, question 1K may be a 2 part, maybe 3 part, maybe 4 part. Then question number 2, 3, 4, 5, 6. Out of these 5 questions, you have to attempt any 4. So what precaution you have to be taken at the time of answering the questions, I will discuss. Don't worry. So now start the law. Question is, what is law? According to me, law is love against war. L for love, A for against, W for war. Sorry, ये कैसे हो गया? See, normally, if you imagine, if there is no police rule in a city, so there will be crime. And if there is police rule, that is law is there will be no crime. जब crime नहीं होगा तो झगड़ा ही नहीं होगा. So it is, it's my opinion, the law is love against war. आप भी law से love करो, definitely you will earn, you will get respect, you will get reputation. ठीक है ना? Sir, in law there are many sections. Don't worry, yeah. Practice makes a man perfect. Makes man includes women. Don't worry. So your energy in previous lecture, sir, and that is awesome. Very good. Thank you. Sir, I have attended. Ashish is saying, sir, I have attended your batch 5 session, and you are awesome in your lecture. Thank you so much, my love. Sir, there are lots of sections. Is it must to know all the section? Listen, एक बड़ी query आती है बच्चों की. Some students have there are number of sections, there are number of problems. I think all of you, most of you know the driving, right? जब हम ड्राइविंग करते हैं ना, तो जब मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं ड्राइविंग से सीख रहा था तो मुझे लग रहा था आई एम थिंकिंग हाउ टू मैनेज स्टीयरिंग एट द टाइम, हाउ टू मैनेज द एक्सीलेटर, हाउ टू मैनेज ब्रेक. बट आफ्टर प्रैक्टिस नथिंग टू लर्न, नथिंग टू रिमेम्बर, ऑटोमेटिकली सब चीज हो जाती है. एवरीथिंग इज इन ऑटोमेटिक मोड. तो डोंट वरी व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू रिवाइज, तो ये सेक्शंस इज ऑन योर टिप्स. यू हैव टू, यू मतलब ऑटोमेटिक यू लर्न. ठीक है. सर आपको इतने ज्यादा अवार्ड मिले बेटा, मिले इससे भी ज्यादा है पर वो दिख नहीं रहा है अभी स्क्रीन में पूरे. This is totally new for us. Navya is saying, is it tough or not? I will ask this question in the 10th lecture. You will say beta, don't worry. Sir, I am a science background student, so the law subject is difficult for me. No beta, law is used in daily life. Everyone is using law in daily life.
सर मेडिसिन टू बी टेकिंग रेगुलरली, डेफिनेटली एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए. What is the weightage? I discussed beta. What is the weightage? Beta, this is I think there is contract in contract. There is no change. So it may be December. It is same for December and same for May 2023. Don't worry. Is it the first class of law? Technically, it is first class, and it's one day before the session taken by Madam Megha Madam for introduction. Sir, you will teach us how to write the descriptive question answer. Definitely, but I will teach, but in 10th lecture. Okay. Sir, you are a good teacher. Thank you. Beta, तुम पढ़ाई शुरू भी नहीं किया मेरे लाल. Sir, is the study material enough to get ready for answer writing? Definitely yes. Study material is well complete. Sir, I am very much interested in your class. I am also interested in teaching my love. Sir, it is required to write section in law. Okay, we will discuss later. Sadhana, what you said, but very good. Sadhana is saying business law is like learning a car. Without learning and practice, we will be crashed. But with practice and training, we will be at the peak of the driving that car. That is the very good thing. Sir, we have to make notes. Beta, I have uploaded the my PPTs in PDF, so that are sufficient for notes. You get the printouts and you can add or less. You can add your points. सर कितने दिन में वन सब्जेक्ट करेंगे कंप्लीट? आई थिंक द लॉ लेक्चर अबाउट 25 to 30. आई एम नॉट श्योर बट 25 to 30. In 10th lecture, please tell us how to practice different cases by ourselves. Definitely, I will teach you. यार, don't worry. अभी तो स्टार्ट करना है यार. Sir, how to know any amendments? Okay. देखिए, in Indian Contract Act, Partnership and Sale of Good Act, there is no amendment. In LLP and company, there will be amendment that will be given by the faculty. Don't worry. Sir, how to study law subject by example or by provisions as per your opinion? We will discuss beta. I think we should start, otherwise there will be delay. So let's start. तो जो लॉ है, तो लॉ की जो लैंग्वेज है वो दैट इज इन पैराग्राफ. Just a moment, beta. In paragraph, and paragraph are called sections, right? If the section want that paragraph that is called section want to explain something in itself, so that sub paragraph is called subsection. And if something has to be explained in subsection, the part is called clause, and the part of clause is called subclause. Let's see, for example, section 4, subsection 1, clause A, subclause 5. That is the way of reading. But sometimes after section, there is no subsection, there is clause. And that is there where the part is totally exclusive. For example, in section, मान लीजिए section में दो part हैं, 1 और 2, and both are
inclusive, both are connected, both are relative with the section. So they are called subsections. But like definitions, the section, for example, in Indian Contract Act, definitions are given in section 2. The purpose of definition is there in the initial stage, because when you read the law, you must have the knowledge what is the meaning of the term. So जब हम definition पढ़ते हैं, when we read the definition, so the part are not connected with each other. One part is totally different from other. भाई definition एक अलग होगी, दूसरी अलग होगी. एक ही बताएगा definition, एक B का, तो part दोनों अलग अलग है. तो इस केस में they are not called subsection, they are called part. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्शन 2 है, उसमें डेफिनेशन दी गई है, तो जो उसका सेकंड पार्ट होगा, दे आर कॉल्ड क्लॉज, नॉट द सबसेक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 2H में दी है, तो H इज कॉल्ड क्लॉज. देयर इज नो सबसेक्शन, डायरेक्ट इज क्लॉज. तो वहां सबसेक्शन हट जाए. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. देखिए, यू रीड द लॉ, I will teach you the law, you will read, but if you could not present, you could not tell you know the law to an examiner, everything is failed. Purpose ही बेकार हो गया यार. देखा ना ढाबे पे, you see the difference of presentation. I was in literally yesterday I was in Mumbai. So Mumbai, that World Congress was organized, and you believe the roti, chapati is called chapati. I eat at dhaba. The price of chapati is about 10 to 15 rupees. But in this hotel and where I was taking the stay, the chapati price is 210, 210 rupees, just because of presentation. So you have to present like 5-star, not like dhaba. तो अब 5-star कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, बिल्कुल बेफिक्र हूं, बता दूंगा 5-star प्रेजेंटेशन कैसे होता है. बट प्रेजेंटेशन आपको करना है, एग्जाम समझना आपको है. ठीक है ना बच्चे. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और क्या प्रॉब्लम है, एक आध और ले लूं बच्चों की प्रॉब्लम, फिर चलते हैं. Sir, give me some advice. If he is asking for notes making, beta, you just get the printout of my notes, and if you can add according to your choice. Study साथ में रखिए, आप अपनी स्टडी के साथ पढ़िए. ये समरी वे में नोट्स हैं हमारे, इसमें आप चाहें तो ऐड करके अपने स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं. सर अमेंडमेंट क्या होते हैं? अमेंडमेंट बेटा जो चेंजेस आए लॉ में जो आपके लिए रेलेवेंट है, तो वो करो अमेंडमेंट. ये कैसे मिलेंगे? तो इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले एक आरटीपी जारी करता है, रिवीजन टेस्ट पेपर, उसमें अमेंडमेंट सारे आपको मिल जाएंगे. डोंट वरी. व्हाट इज subsection and clause? Subsection I have discussed, the part of the section is subsection or clause. When the parts are connected, they are called subsections. When parts are exclusive, not connected, are called clauses. So this is, we are starting the Indian Contract Act 1872. So unit 1, nature of contract. And but before the Indian Contract Act was just a moment. Okay, please note, I think one slide is missing. No, okay, here come. Indian Contract Act was effected on the contracts which are entered on or after 1st September 1872, right? 1 सितंबर 1872 या उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा. और ये एक्ट अब पूरे ऑल ओवर इंडिया पे है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. बट क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट वाज द लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? So come to the slide. In ancient time and medieval time, there was no specific law. पुराने जमाने में कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. फॉर दिस पर्पस जनरली डिफरेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ लाइक वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति,
Shruti were referred for the law. But during the Maurya Kal, Chandragupta Maurya, remember, contract were in the form of bilateral transaction like barter. But in Mughal rule, Akbar, Babur, contract were governed by the Mohammedan law. The Mohammedan law was there, and for example, you need not to go through the Mohammedan law. You don't need to go through the Hindu law. I'm just taking the idea. So in Muslim law, the word ijab was used for offer, proposal, and kabul was used for acceptance. And during British period, before the Indian Contract Act, the English law was applied under the Charter. Charter means letter of law. Charter 1726 issued by King George to East India Company. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया चार्टर, वही रूल लागू किए अंग्रेजों ने हमारे देश पर. उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, वहां से ये चालू. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सेक्शन मैंने ऐसे लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं ताकि आप भी एक लिस्ट बना लो. You also prepare the list of sections, so you remember when you read 2 or 3 times daily in the morning, या जब भी आपको टाइम मिले एक बार रिवाइज करेंगे. That will be used to, you will be used to what these sections. So Raj sir, where can I find notes? Just beta, I have uploaded the PDF on this portal. आगे बढ़ते हैं. तो these are section 1 applicability, section 2 ये important section है इन हमारी unit 1 में. Section 2 clause A, section 2 clause B, section 2 clause C, and so on. Right? So we have discussed the Indian Contract Act applicable. That is section 1 says Indian Contract Act applicable on the contracts which are entered on or after 1st September 1872. And this extend to whole of India. पूरे देश में लागू होता है. जम्मू एंड कश्मीर जब से जो सेक्शन 370 हटा है उसके बाद से पूरे देश पे लागू हो गया. बट उससे पहले दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. So there are important terms which are very much you must understand before starting the act. Contract, agreement, and promise. Contract, agreement, and promise. See, but we have to discuss in reverse way. First we will discuss promise, then we will discuss agreement, and then we will discuss contract. Okay. So what is the meaning of promise? Promise is section 2 clause B says when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when proposal accepted becomes a promise. Means I asked Mr. A, will you purchase my car? I have made the offer. मैंने ऑफर दिया मिस्टर ए को, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? ए ने कहा yes sir. It means he has accepted my proposal, and then accepted proposal is called promise. Now this promise between me and Mr. A. Agreement is one step more. Section 2 clause E says every promise and every set of promise forming consideration for each other. Now included consideration. It means in promise when we add consideration it has become agreement. The question is what is consideration? Consideration means something in written. Let's see the example. I asked Mr. A, will you purchase my car for 1 lakh rupees? So I am giving the car and what I am getting? 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees is the consideration for me. Mr. A is giving 1 lakh rupees and what he is getting? Car. It means the car is consideration for Mr. A. मैंने Mr. A से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? ए ने कहा हाँ भैया खरीद लूंगा. अब मैं तो कार दे रहा हूं, बदले में क्या मिल रहा है मुझे? 1 लाख रुपया. तो 1 लाख क्या हो गया? कंसिडरेशन मेरे लिए. राइट. मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपया. दे क्या रहे क्या मिल रहा है? एक
कार मिल रही है, दे क्या रहे हैं 1 लाख रुपया, तो एक के लिए कंसीडरेशन क्या है कार. तो समथिंग रिटर्न, व्हाट आई गेट इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर मी. क्लियर है इतनी बात. कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2, ये वन स्टेप और आगे आ गई. सेक्शन 2 क्लॉज एच, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. एनफोर्सेबल होना चाहिए. इट मींस promise, promise means offer plus acceptance. Is that then promise plus consideration equal to agreement, and agreement plus enforceability by law equal to contract. So what is the meaning of enforceability by law? For example, I have purchased a car for 10 lakh rupees and I have made the payment by check. Clear? But I have not signed the check. तो क्या वो क्लेम कर सकता है? Whether the seller of car can claim the payment? No, the contract is not enforced, right? तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं रहनी चाहिए. That is called contract. So what is the summary? Please read. Promise equal to offer plus acceptance, agreement equal to promise plus consideration, and contract equal to agreement plus enforceability by law. Section 2 clause B, it means promise equal to section 2A offer plus section 2 clause B acceptance. It means both promise and acceptance are defined in section 2 clause B, right? Section 2 clause E, agreement equal to section 2 clause B. Section 2 clause B, what is promise, and section 2 clause D, that is consideration. Section 2 clause H, contract equals to section 2 clause E, agreement plus enforceability by law. I think it is very much clear to you. बताओ बच्चों को दिक्कत इसमें. What about section 2 clause D? Section 2 clause D, beta, it is for consideration, and we will discuss the full chapter. Full, and I think lecture number 3 is for consideration. Don't worry. What are the important section to be remembered? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो आप पढ़ते जाओ, सारे सेक्शन नोट करते जाओ, जितना याद हो जाए that is sufficient. ठीक है ना. Consideration, I have explained something in return. अगर मैं कोई चीज किसी को दे रहा हूं और बदले में जो मुझे मिल रहा है, that is called consideration for me. ठीक है. Promise, offer and acceptance equal to promise. आपने ऑफर किया, सामने ने एक्सेप्ट किया, इट कॉल्ड प्रॉमिस. एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इट शुड बी इन द आईज ऑफ लॉ, इट शुड बी अ लीगली लीगल फॉर्मेलिटी शुड बी फुलफिल्ड. जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं. क्लियर इतनी बात? क्लियर हो गया मेरे बच्चों? सर स्टडी मटेरियल में एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है. इसको भैया करेक्शन कर लो, मैंने सही करा दिया स्टडी में, ये अब ये हो गया है. तो एग्रीमेंट इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन 100%. प्रिंटिंग एरर थी, वो सही हो गई अब स्टडी में. किशन बस क्या दिक्कत आई बेटा? कौन सी चीज समझ में नहीं आई? क्लियर हो गया तरुण को? ठीक है बेटा. एनफोर्सेबल मैंने बताया बेटे, जैसे आपने चेक दिया और वो साइन नहीं किया तो वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. मैंने डॉक्यूमेंट बनाए प्रॉपर्टी के लेकिन साइन नहीं किए तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? दिस इज सेक्शन 10 एंड आई थिंक अ फुल क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स may be asked in your exam on this topic. Like that, what is the meaning of contract, define contract, and what are the essential elements? So there may be a full-fledged question on this part. We start करते हैं, we will discuss one by one. First essential element of a valid contract is offer and acceptance. You made the offer, but no one has accepted. There is no promise. If no promise, no agreement, no agreement, no contract. Clear? दो पार्टी होनी चाहिए भाई. एक ऑफर करेगी, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा. अगर दो पार्टी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है ही नहीं. सी द एग्जांपल.
A offers to B to sell his watch for rupees 500. B does not give his acceptance. There is no contract because there is no acceptance. A ने ऑफर किया B को, B ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से होगा भाई? क्लियर इतनी बात? एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ये केस लॉ था, द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी. व्हाट वाज द केस? प्लीज रीड and I will discuss, I will explain you. When on the dissolution of partnership, the assets of the firm were divided among the partners. The sale tax officer wanted to tax this transaction. क्या हुआ कि partnership firm was dissolved, and after dissolution, the assets are distributed. Sale tax department said, so this is sale from the firm to the partners, and therefore sale tax liability is there. कि भैया फर्म जब डिसॉल्व हुई तो असेट पार्टनर में बढ़ गई, राइट? अब कोर्ट ने, ये सेल टैक्स ऑफिस ने कहा भैया ये तो सेल हो गई, फर्म ने असेट पार्टनर्स को बेच दी, और इस पे हमें सेल टैक्स चाहिए. देन व्हाट द कोर्ट सेड? द कोर्ट सेड it was not a sale because the partners being joint owners of those assets and cannot be both buyer and seller. कहता भाई असेट भी तो पार्टनर की थी, पार्टनर तो ओनर थे, तो खुद को कैसे बेच सकते हैं? खुद ही खरीदते खुद को कैसे बेच सकते हैं? नहीं हो सकता ना, तो ये सेल नहीं मानी जाएगी और इसलिए इस पे सेल टैक्स नहीं लगेगा. दैट वाज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप. सोशल नेचर, डोमेस्टिक, घर गृहस्थी के कॉन्ट्रैक्ट, ये कभी भी लीगली नहीं होते, लीगल नहीं माने जाते. तो इस पे केस था, दैट इंपॉर्टेंट केस था ना, बेंचमार्क केस, that is Balfour versus Balfour. Mr. Balfour versus Mrs. Balfour. A husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. क्या हुआ भाई यहाँ तक? हस्बैंड गया बाहर कमाने और उसने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने खर्चे के पैसे भेजूंगा, भेजे नहीं. वाइफ ने सूट फाइल कर दिया कि भैया पैसे नहीं भेजना, खर्चे के हमें तो. नाउ व्हाट द कोर्ट सेड हियर इन दिस केस, वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज ए सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. कोर्ट ने कहा भाई ये तो आपके घर के मामले हैं, सामाजिक मामले हैं, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो आप आपस में निपटाओ, आपस में निपटाओ. ये अगर आपका डिवोर्स हो गया होता, यानी यू आर नॉट इन रिलेशंस, उस समय तो प्रॉमिस होता, then court will interfere. But this is at the time of when the relationship of husband wife exists. इसलिए there will be no interference by the court. I think this was the first case जब wife जीती थी husband से legally, wife हारी थी husband से legally. So that was the important case कि in the nature of social agreement, domestic nature, they are not a legal agreement, they are just like social agreement. And they are not in the term of contract. वो contract कभी नहीं कहलाए जाएंगे. Let's see then one more example. Example number 4. Mr. L promises to pay 5 lakhs to his son if the son passes CA exam. Important example है. पापा ने कहा बेटा पास हो जा, CA बन जा, 5 लाख रुपए दूंगा तुझे. On passing the exam, the son claims the money. बेटा भी कम नहीं था, लाओ पैसे लाओ. Here the son could not recover as it was a social agreement. ने कहा भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, घर का मामला घर में निपटाओ. तो this is the social agreement and son could not get the amount. तो प्लीज रिमेम्बर, ध्यान रखना इस केस को. अभी तो माँ बाप बहुत प्रॉमिस करने वाले हैं, बेटा तू पास हो जा, फाउंडेशन निकाल दे, तेरे लिए आईफोन दिलवाऊंगा मैं. तैयार रहना, इससे लीगल कुछ नहीं हो सकता. आप प्यार मोहब्बत से ले लो, पापा से तो ले लो, लीगली नहीं मिल पाएगा आपको.
ठीक है. Example 5, A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods in 30 days. A sold goods to B on the condition that he must pay for the amount of goods in 30 days. Here, A intended to create legal relationship with B, the contract of sale. Here, the same is contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of clear. Mr. Abhishek Vishwakarma is asking, sir, ये example number 2 में, I think this was the example, में 2 में पार्टनरशिप एक्ट लगेगा? नहीं बेटे, यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स अलग है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Legal formalities. So contract for should be valid. Someone is asking, sir, what is the meaning of valid? Valid means proper, complete, that can be claimed. So legal formalities should be there. If legal formalities are required in the matter, but there is no legal formality, there is no contract. But I'm just taking, for example, signing of check. Wherever a particular type of contract required by law to be in writing and registered, it must comply with the necessary formalities, such as should be writing, attestation, and registration. Otherwise, that is not enforceable. See the example where it requires an agreement to make a gift for natural love and affection. There, it must be in writing and registered to be done. एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, the requirement of the law that if someone, for example, Mr. A is giving to B something on account of natural love and affection with, let's say A and B are relation like brother sister, and A want to give something to B, but law says it should be written and registered. Until it is written or registered, there is no contract. Nothing can be claimed by B. One more example, contract of insurance is not valid except it is a written contract. तो दो एग्जाम्पल में डिस्कस किए बच्चों आपसे 6 और 7. 6 में एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई गिफ्ट कर रहा है किसी को ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. फॉर एग्जांपल, मैं अपनी सिस्टर को अपनी कोई बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ या अपनी एक फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो रिटर्न में होना चाहिए और कोर्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए. अगर जब तक वो रिटर्न या रजिस्टर्ड नहीं होगा, तब तक मेरी सिस्टम उसको क्लेम नहीं कर. ठीक है, द सेम वे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रिटर्न होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाए. Next point, certainty of meaning. Let's see an example. I'm asking Mr. A, will you purchase my car for 1 lakh rupees? I'm asking Mr. A, will you purchase my car for 1 lakh rupees? But I have 3 cars and I'm not making clear which car I want to save. So the meaning is not certain. There is no offer. There is no offer. See the example. A agrees to sell to B 200 tons of oil. There is nothing certain in order to show what kind of oil was intended. ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन सा ऑयल उसको बेचना है. There is no offer. But see one more example. Example number 9. XYZ Limited agrees to lease the land to Mr. A for indefinite years, not certain, indefinite. The contract is not valid. Unlimited time के लिए हम आपको दे रहे हैं लीज पर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, टाइम लिमिटेड होनी चाहिए. सर्टेनिटी नहीं होगी, the contract is not valid. Possibility of performance. It means the contract which you are entering should be possible to perform. If performance is not possible, there is no contract. Let's see. The term of the agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced.
अगर एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है तो वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सी, ए एग्रीज विद बी टू पुट लाइफ इन हिज डेड वाइफ, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स एज इट इज नॉट पॉसिबल टू द बी। क्लियर? कोई मरे हुए में ए ने बी से कहा मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ में जान डाल दूंगा, इसके मुझे पैसे दो, पर ये पॉसिबल नहीं है। पर एक जोक है यार, बड़े देयर इज सम जोक। A agrees to B, I will put the life in your dead wife. B says how? Take the 1 spoon of banana cement in her mouth because इस सीमेंट में जान है। इन्होंने कहा बी से कि मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ में जान डाल दूंगा। उन्होंने बी ने पूछा कैसे? कहता इनको 1 चम्मच बनानी सीमेंट खिलाओ, ये अल्ट्राटेक सीमेंट खिलाओ। क्यों? क्योंकि लिखा है इसका स्लोगन है इस सीमेंट में जान है। ओके, इसकी क्वेरी नहीं है। वन मोर एग्जांपल, A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced because it is not possible to get performed. Free consent. But we have 2 lectures on this topic, free consent, section 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, A, 20, 21, 22 will be covered at that point. Lecture number 4 and 5 on these topics. So we will discuss in detail, but we are taking an idea. For example, I asked Mr. A, will you sell your Activa, your scooty for 5 rupees? मैंने मिस्टर ए से पूछा क्या तुम अपनी स्कूटी 5 रुपए में बेचोगे? इन्होंने कहा नो, आई हैव टेक अ गन एंड कीप एट हिज हेड। उसके सिर पे गन लगाई, पूछा अब बताओ। ही सेड यस, ओके 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 सर, ओके आई विल सेल, बट कंसेंट इज देयर, नॉट फ्री। कंसेंट तो दी पर उसने दबाव में कंसेंट दी। इन दैट केस देयर इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है इतना सा ब्रीफ आइडिया? आई विल डिस्कस डिटेल इन डिटेल द चैप्टर लेक्चर नंबर 4 and 5. The term consent is very important. Consent means parties must be agree upon the same thing in the same sense. I have put two pictures on the slide. Both are plant, but both are different. A is asking to purchase this plant, and B is thinking for this plant. A asks B, will you purchase my plant? A is asking for this plant and B is thinking for this plant. Whether consent is valid? No. There is no consent. Consent ही नहीं है यार। मैं कुछ समझ रहा हूँ, तुम कुछ समझ रहे हो। There is no consent. So there should be a consensus at ID, means consent. Both the person should agree on the same thing in the same sense. Clear इतनी बात? Next, take the example. A who owns 2 cars is selling Z car to B, and B thinks he is purchasing the black car. A के पास 2 कार है, वो रेड कार बेचने के लिए कह रहा है, B समझ रहा है कि वो ब्लैक कार बेच रहा है। There is no consent. There is no consensus at hand, and there is no contract. क्लियर है बच्चों इतना यहाँ तक? तो मैं देख लूं क्या क्वेरी है तो बताऊं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। What is the attestation? Attestation means certification. ठीक है सर, it is not valid if you create social relationship. नहीं, valid तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट तक ही रुक जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो। ठीक है, अगर कोई सोशल एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इट मींस इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर, व्हाई द सेक्शन नंबर not written in ICI study material, only name is written? देखो,
at your stage, section is not very much important. Provisions are very much important. तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया कि जहां सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पहले प्रोविजंस कर लो, सेक्शन तो आप अगले सीए इंटर में भी करोगे ढंग से और सीए फाइनल में भी करोगे, ठीक है सर। एग्जाम में डेफिनेशन एज इट इज लिखना होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर मतलब वही होना चाहिए। You can write the law in your own language. You can write the provisions in your language, but meaning should be same. Meaning must not be changed. Okay. Sir, we are supposed to remember case laws. I think you must name and remember the name of case law. Okay. Consensus at ideal, Anshika Arya. Consensus means consent should be on the same thing. दो लोग बात कर रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहे हो, तो दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो। एक जना जिसके बारे में कह रहा है, दूसरा उसी को समझ रहा है, कोई और मतलब नहीं। That is, then it is called consensus at ideal. ठीक है। हाँ, some Jay is saying, sir, some elements are not given by section 10. Yes, section 10 is inclusive. Something, some sections are given, more sections are given in which the importance of content is there. So that is covered here. भाई और भी sections हैं जहां पर लिखा है कि ये से content होना चाहिए या ये इसमें content की requirement दी है, तो वो भी यहाँ cover किए जाएंगे, भले ही वो केवल section 10 में ना हो। ठीक है। Consent is said not to be free when it is weighted by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. Coercion means physical torture, जिसमें मैंने गन लगाई, physical torture, undue influence, moral torture, I think, and fraud, धोखाधड़ी, misrepresentation, false presentation, mistake. So we will discuss all these 5 points in the lecture 3 and lecture number 4 and 5. Don't worry. But at this point, the important thing is that there should be a consent for a contract, and consent should be a free. Free means without any pressure. In such case, the contract becomes voidable at the option of the party whose consent is not free. Voidable means can be void. I have taken the example now. Activa example. I have taken the example of Activa. I asked Mr. A, "Will you sell your Activa for 5 rupees?" And I put the gun on his head. Now he said, "Okay, okay." But you tell me whether to sell the Activa in 5 rupees is invalid if everything is okay. मान लीजिए, if a thing that is not useful for the Activa is not useful for A, and he want to sell at any rupee, any price. He said, okay, 5 rupees okay. अगर कोई गन नहीं लगाता मैं और उसको 5 rupees में ओके होता, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता? नहीं। अब कोर्ट को कैसे मालूम पड़ेगा? How the court will know that coercion is used in this contract? A has to prove. Until that, contract is valid. It means A can avoid the contract. A चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है या कंटिन्यू कर सकता है. That's way that is not valid, that is voidable. It can be void, but until void it is valid. A से मैंने 5 रुपए में एक्टिवा खरीद ली, अरे दोनों राजी थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ना भाई. अब मालूम मैंने गन दिखा के खरीदी है, तो कोर्ट को तो नहीं मालूम कि मैंने गन दिखा के एक्टिवा खरीदी है, तो ए बताएगा, ए प्रूव करेगा सर मैंने गन दिखाई थी. तो जब तक वो नहीं प्रूव करेगा कोर्ट तो वैलिड ही मानेगा ना. तो ए उसको वॉइड कर सकता है, ए उसको वॉइड कर सकता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है वॉइडेबल, व्यर्थ नहीं है. राइट. एक बच्चा मेरा पूछ रहा है, मेरा बेटा कौन है, मिस्टर कोस्टू. माय सन इज आस्किंग, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? प्रोविजन मींस लॉ.
जो हम पढ़ रहे हैं, what we are reading, law, it means matter of law is called provisions, right? केस स्टडी, केस स्टडी अभी रुक जाइए, दैट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अभी रुक जाइए बच्चे। सर देयर इज एनी ब्रेक, अरे यार ब्रेक ले, बोर हो गया क्या मिस्टर आशुतोष, बोर हो गए क्या भाई? नहीं हुए ना, थोड़ा सा पढ़ लो यार, मैं देता हूँ ब्रेक, दूंगा यार, थोड़ा सा कर लो। शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो बता दे यार। प्लीज एक्सप्लेन voidable. Okay, I have told you voidable means beta which is not void but can be void, which is not void but can be void. We will discuss in a later half कि void क्या, voidable क्या होता है, don't worry. बेटे we will discuss void. Void agreement means that cannot be claimed, is called void. जब essential element नहीं होगा तो void हो जाएगा। अभी डिस्कस करते हैं बेटा उसको, प्लीज वेट। See the example I have already discussed with you. A threatened to shoot B if B does not lend him rupees 2000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into the under portion and hence voidable at the option of B. It means B will decide whether to avoid or not, whether to cancel the contract or not. ठीक है? Mr. Raj Vishwas is saying, sir, I have a problem to understand many words in the book. Okay, if you have some, that is not normal thing. Normally क्या होता है कि normally what happens, the terms in law are something different. That is not the regular words. So this time you are starting the law, you use the dictionary and put the meaning above the word. When you read 1 or 2 times, 3 times, 4 times, you will use to the meaning. So don't worry. है ना, ये करना शुरू करो। Weighted means verified. Yeah, which means affected. Weighted means affected. Sir, how can we differentiate void and voidable? But please wait for next 1 hour. I will discuss the meaning of void and voidable. Don't worry. Sir, tricks दे दीजिए. Please wait, बेटा. अनुष्का, सर मैं एग्जॉस्ट हो गई कंटिन्यू क्लास से, बेटा 5 मिनट तो दे दे, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, तू पढ़ने आई है बेटिया, पढ़ने आई है, थोड़ा सा वेट कर ले बेटा, अभी तो बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये एलिमेंट खत्म करके देखते हैं ना। कॉम्पिटेंट पार्टीज सेक्शन 11 and 12. So this section says there are 3 persons who are eligible to enter into contract. One is he should be major, he is not be minor. He is of sound mind. Sound mind means who getting the sound in his mind, who can understand the terms of the contract. Unsound means in normal language it's mad, पागल, इसे बोलते हैं unsound. तो सही होना चाहिए, समझदार होना चाहिए आदमी. Is it not disqualified from contracting by any law to which he is subject? It means if something is disqualified, specifically disqualified, someone is specifically disqualified for entering into contract, so that is not competent. लॉ ने कहा भैया 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला जो मेजर होना चाहिए, मेजर मतलब जिसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा जो साउंड माइंड हो, समझदार हो, समझता हो, पागल नहीं। तीसरा जो किसी और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है। कंसिडरेशन वी हैव डिस्कस, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, something in return, it means something return, and in that technical language it is called quid pro quo, ठीक है। तो lecture number 3 in detail. A agrees to sell his book to B for 100 rupees. Now 100 is consideration for A and book for B. A agree कर रहा है
कि मैं बी को किताब बेचूंगा 100 रुपए में, ए को क्या मिलेगा 100 रुपए मिलेंगे, तो 100 कंसिडरेशन हो गया ए के लिए। और बी को क्या मिल रहा है, किताब बुक मिल रही है, तो बुक किससे कंसिडरेशन हो गया, बी के। राइट बच्चों, A promises, please see the example, it is important example, please ध्यान दीजिए, थोड़ा देर और ध्यान दीजिए, फिर ब्रेक लेंगे, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Example 14, A promises to drop prosecution instituted against B for robbery and B promised to restore the value of the things taken. This agreement is void because robbery is crime and they should be punished. What is the agreement? Okay, I will not file the case on you if you give me if you return my everything. That is void because robbery is punishable. ए ने बी से कहा भैया तुम मुझे सारा जो तुमने चुराया मेरे घर से वो वापस कर दो, मैं तुम्हें केस फाइल नहीं करूंगा। ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड है यार, क्योंकि रॉबरी चोरी करना तो कानूनी अपराध है, उसमें तो पनिशमेंट होना ही होना है, चाहे वो वापस करे या नहीं करे, क्राइम तो हो गया ना। इसलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गए। Purpose, the purpose of the contract should be lawful. If it is illegal, immoral, immoral means bad character, or opposed to public policy, public ke against something is something against public, it is void. It is not a valid contract. See the example. A agrees to give rupees 50,000 to B for murder of C. ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, सी को मार दो। Hence the object of A is unlawful. Hence there is no contract. So imagine, imagine A agrees to B 50,000 to B for murder of C, ठीक है? And B killed the C, and he asked A, give me 50,000 rupees. ये कहता है, A says no, I will not give. Now B go to the police station for making the complaint. Sir, he told me to kill the Mr. C and I killed, but he is not giving my money. सोचो क्या होगा? ए ने बी से कहा मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, सी को मार दे। बी ने सी को मार दिया। जब बी ने पैसे मांगे ऐसे, ए ने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा पैसे। अब बी गया कोर्ट में या पुलिस के पास, मुझे कंप्लेंट लिखानी है ए के खिलाफ, इसने मुझसे कहा था कि सी को मार दे, मैं 50,000 रुपए दूंगा, नहीं दिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो वो खुदा ना। That is not law, that is unlawful. Clear है? The agreement not expressly declared void. Which agreements? Some agreements are nature that should be cannot be done by ordinary man. Like railway ticket can be sold by the railway department only. ठीक है ना? तो if a man is selling the railway ticket, that is not an legal agreement. That is not an valid agreement, valid contract. The agreement must not be one which the law declares to be either illegal or void. Illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. कोई ऐसा agreement जिसे law ने specifically मना किया हो करने के लिए और आप उस agreement को कर रहे हैं, तो that agreement is called illegal. Right? See the example, agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings are void agreement. Those agreements prohibited by Indian Penal Code, said to crime, murder, publishing defamatory statements, agreement which are opposed to public policy are illegal. ये इस तरह के agreement जो illegal है और that are not allowed, that contract cannot be claimed in any court. Okay. So अब आई मजेदार बात. This is the time for super over before the break. ये super over है break से पहले. After this super over, we will take the break. We will have the break of 5 minutes. 5 minutes. Now, what is a super over? In every 1 hour, we will have a super over. And in this super over, we have 6 questions. You have to answer all the question in one time, one way. ठीक है? आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे पूछूंगा, आपको टाइम दूंगा. ये वो है जितना आपने पढ़ा है. What we have discussed in last 1 hour, I will ask in super over.
ठीक है, remember Super 2007? So that is the same. And I will take the name of 5 those students who will give all the correct answer in one shot. सारे आंसर एक साथ लिखेंगे, all the correct answer, right? अभी क्या प्रॉब्लम है? Consensus I have discussed, बेटा consensus क्या है? If Mr. A signs contract with Mr. B, after signing of the contract, Mr. B knows that Mr. A is disqualified by another law. In the case, should Mr. B able to claim for compensation? No. Miss Aishwarya is saying Mr. A signed contract with Mr. B, but after signing the contract, Mr. B knows that Mr. A is disqualified by another law. So their contract is void. That cannot be claimed, right? So restraint of trade means to stop someone to doing any business. सर यहाँ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब किसी लॉ ने उसको एंटर करने से मना किया हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी जेल में, तो लॉ कहता है जब तक वो जेल में है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता भाई, तो डिस्क्वालिफाइड बाय, राइट. So let's start the first question of the super over. Remember, I will take the name of only those persons, those 5 persons who will send all the 6 answers in one shot. Correct answers, right? First, the Indian Contract Act 1872 applicable with effect from 1st August 1872, 1st September 1872, 1st October 1872, 1st November 1872. Mr. Satyanarayan, please not mention single answer. Mention all the answers in one time. Second question, every agreement is a contract, but every contract is not an agreement. Every agreement is a contract, but every contract is not agreement. This statement is wrong, correct, correct, subject to some exception, partly correct. ध्यान से पढ़ना, please read carefully. Next. Which one of the following is not an essential element of a valid contract? Which is not essential? You have to select the best option. Please listen. These are the tricky questions. Which is not as essential element. Not essential. A, B, C, D. Next question. A promised to pay 1,000 to B if B writes 100 pages in 1 minute. This is known as void contract, voidable, valid, unenforceable. Students, you are sending answer 1, 1, 1. कभी आप you are sending either 4, 3 ऐसे भेज रहे हैं. Please don't send this in this way. You have to send all the answers, all the 6 questions answers in one shot. Then I will take the name. Right? Next. Mohan invited Sohan for a dinner. Sohan, by expending ₹200, went to Mohan's house. By the time Sohan reached Mohan's house and it was locked, Sohan stayed in a hotel. Sohan can sue Mohan for damages.
सू मीन्स केस फाइल कर सकता है, क्लेम कर सकता है. मोहन फॉर डैमेजेस, डैमेजेस कॉम्पनसेशन. कैन नॉट सू अगेंस्ट मोहन. Sue Mohan for total charges. Sue means case file. None of the above. Yuvraj, you send 5 answers. You have to send beta all the 6 answers, please. Next question. Does not affect the free consent of the parties. Which does not affect? Fraud, coercion, incompetence of parties, or undue influence. So this was the super over 1. पहला super over आप लोगों के लिए. So who sent all the correct answers? All the 6 answers, 6 correct answers. अभी 5 आए हैं मेरे पास. 6 तो किसी ने भेजे ही नहीं. अभी नहीं आए. हाँ ये तो आने शुरू हो गए. चेक कर लें. तो फर्स्ट वन who has given all the correct answers is Mr. Sarthak Mohanty. Congratulations. Second one. चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, आंसर फिर बताएंगे. मेरा तो जब ही आएगा प्रॉब्लम. The Indian Contract Act 1872 applicable with effect from 1st September. Second one is, ये बड़ा tricky question था. Every agreement is a contract, but every contract is not agreement. This is wrong. Every contract is an agreement. Because agreement होगा तभी तो contract होगा. और agreement अगर enforceable by law नहीं हुआ तो contract नहीं है. So that's why every agreement is not contract, but every contract is agreement. This is the wrong answer. Next. Which one of the following is the essential element? Which is one of the is not an essential element? तो भैया कंसिडरेशन भी एसेंशियल है, फ्री कंसेंट भी एसेंशियल है, कॉम्पिटेंट पार्टीज आर आल्सो एसेंशियल. So the answer will be option D, because A is essential, B is essential, C is essential. So the right option is D. Next one. A promised to pay rupees 1000 to B if B writes 100 pages in 1 minute. It is not possible, impossible. So that is void contract. Impossible ही नहीं है 1 मिनट में 100 पेज लिखना. पढ़ भी नहीं पाएगा 100 पेज तो. Next one. Mohan invited Sohan for dinner. Sohan, by expending 200, went to Mohan's house. This is social agreement. But when Mohan reached to Sohan's house, the house was locked and Sohan has to stay in the hotel. So Sohan cannot sue against Mohan. Right? Last question. Does not affect the free consent. Which does not affect? Incompetence. Because coercion, undue influence, fraud affect the free consent. So next name is
नेक्स्ट नेम इज मिस आर। कितना लिखा हुआ बच्चे? कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। नेक्स्ट नेम, थर्ड नेम इज मिस वर्णिका। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। फोर्थ नेम मिस्टर अंशुमन साहू। And fifth name is Mrs. Ayushi Yadav. So congratulations all of you. And now at this place we have the break of 5 minutes. Okay, stay for 5 minutes so that we can complete today's lecture in time, right? So take the break, Mr. Vinu, technical support.
ओके ओके, वेलकम बैक बच्चों, आ जाओ, ब्रेक हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन आया है मिस्टर तरुण सिन्हा, ही इज आस्किंग, सर अगर दो जुड़वा ब्रदर हो और एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरी अदर पार्टी के साथ और दूसरे ब्रदर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो क्या कोई केस होगा, उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? बेटे देखो, जुड़वा होने से आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। लेट्स सी, ए और बी दोनों जुड़वा भाई है, राइट? प्रैक्टिकली सोचो, ए और बी जुड़वा भाई थे और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ए से हुआ कि मैं उसको गाड़ी बेचूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा ए से हुआ। अब बी ने क्या किया, मुझे धोखा देके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, मैं पहचान नहीं पाया, बट ये मुझे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे से बी ने ऐसा किया था, अदरवाइज मेरे को पेनल्टी आएगी, मुझे आइडेंटिटी लेनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना? तो ये कोर्ट कोर्ट में डिसाइड करा जाए। सर इन कंसिडरेशन टीम ऑफ मनी रिक्वायर और नॉट लाइक बार्टर सिस्टम, देखिए देयर शुड बी कंसिडरेशन, मनी मे बी द कंसिडरेशन, मे नॉट बी, जरूरी नहीं मनी कंसिडरेशन। व्हाट सुभाष चंद्र बोस से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, that is the consideration, but money is not there, right? So money may be the consideration but not required, जरूरी नहीं। So we are starting the topic classification of contracts. So you are asking the problem, sir, what is the valid contract, what is the void contract, what is the voidable? So we will discuss in next 1 hour and we will clear all the concepts. पर यार एक बात बता दो दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार एक तो बताओ। Classification type is the same, yes. लॉ अच्छी लग रही है, बोल मेरे लाल, या नहीं लग रही है? पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो तो तुम्हारा जवाब आता, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड इन 3 ways. सर वी कैन नॉट सी द स्क्रीन, स्क्रीन इज आई थिंक आ रही है, आप चाहे तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए बच्चे। Contract is classified on 3 bases. First is validity, second is on the basis of formation, and third is on the basis of performance. बच्चों आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना यार, प्लीज दोस्तों, ठीक है? बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, प्लीज माफ कर देना यार, 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा चल जाए तो पढ़ लेना, क्योंकि आज में से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आएगा कुछ ना कुछ। आज के जो मैं क्लास ले रहा हूँ आज, उसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, डोंट वरी, ये बात मान के चलो आप, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर: वैलिड, void, voidable, illegal or unenforceable. On the basis of formation, there are 4 contracts, 4 types of contract: express contract, implied contract, quasi contract or e-commerce contract. And on the basis of performance, executed contract, executory contract. Executory contract is again classified in 2 ways: unilateral contracts or bilateral contracts. Now we will discuss each and every type. ठीक है? So first we discuss on the basis of validity. So first is valid contract. So what is valid contract? If all the essentials what we have discussed, all the essentials of a valid contract are there, are in the contract, contract is valid. बहुत सिंपल, जो एसेंशियल एलिमेंट हम डिस्कस किए हैं वो सारे उस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। पार्टी भी कैपेबल है, 2 पार्टी है, लीगली एनफोर्सेबल है, कंसेंट भी फ्री है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो भी पूरी हो गई हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वैलिड, सही कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब यहाँ कहेंगे सही कॉन्ट्रैक्ट। सी द एग्जांपल,
Mr. A asks Mr. B if he wants to buy his bike for 10,000. B agrees to buy the bike. Now it is agreement which is enforceable by law. Simple सा agreement है यार. A ने B से पूछा भाई मेरी बाइक खरीदोगे? B ने कहा हाँ सर खरीद देंगे. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, सब कुछ सही है. It's called clear. Void. Section 2 clause J. If anything is missing, what we have discussed in the essential elements of a contract, if anything of that is missing in the contract is not valid, it is void. जो भी हमने डिस्कस किया भाई ये एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए. अरे उनमें से सारे हो गए तो वैलिड है, और सारे नहीं हुए, कोई भी एक मिस हो गया तो वो क्या हो गया? वॉइड. वॉइड मतलब उसको हम क्लेम नहीं कर सकते. राइट. सी एग्जाम्पल नंबर 18. एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन नेवर अ कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल एलिमेंट ही नहीं है, इट इज वॉइड, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड. सो आई टोल्ड मिस्टर ए, आई विल गिव यू माय कार but I am not getting anything. That is not a valid, that is void contract. Any contract for unlawful consideration or object is also a void contract. Right? बस सिंपल सा फंडा है यार. अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट है तो वैलिड है, सारे कोई मिसिंग है तो void है. If all the essential elements are existed, are there in the contract, it is valid contract. If any one is missing, it is a void. Example number 19. Mr. X agrees to write a book with publisher. Such contract is valid. But after few days, what happened? Mr. X is in an accident. Now who will write the book? It is not possible because Mr. X is no more. The contract becomes void due to impossibility of performance. Right? This is a valid contract. Thus, a valid contract when cannot be performed due to some uncalled happening becomes void. भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ X का A से कि वो X बुक लिखे किसी पब्लिशर के लिए, और कुछ पेज लिख पाया लेकिन उसकी डेथ हो गई X की. अब कौन लिखेगा बुक? वो है ही नहीं. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई उसका क्लेम नहीं हो सकता. राइट. एग्जाम्पल 20 और देखिए बच्चों. अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर. 10 टन शुगर भेजेगा. बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड, द फायर कॉट इन द फैक्ट्री, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. खत्म हो गया, सब खत्म हो गया. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म. भाई जब चीनी खत्म हो गई, खराब हो गई, पूरी जल गई तो कैसे परफॉर्म? कॉन्ट्रैक्ट जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया, at the time when the contract was entered, it is perfectly valid, but after some time the performance becomes impossible. The contract now become. क्लियर इतनी बात? चलो भाई समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है सर. अभी तक तो अच्छी लग रही है. साधना इज सेइंग बेटा सारी लॉ तो बहुत अच्छी है, पूरे सारे एक्ट, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज वेरी गुड. वेटेड मैंने बताया था तमन्ना बेटे. वेटेड मींस जस्ट कहने सर्टिफाइड या प्रूव्ड. सर अभिषेक इज आस्किंग सर BOS आस्क योर क्वेरी पर ऐप है क्वेरी सॉल्व करने का, क्या बॉस आप ही करते हैं ये BOS फैकल्टी? कुछ क्वेरीज मेरे पास आती हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ जो हम वहाँ पर पूरी टीम है सॉल्व करने के लिए क्वेरीज आपके बच्चे. जो मेरे से कंसर्न है डेफिनेटली आई विल सॉल्व. साधना इज सेइंग सर मैं तो कह रही हूँ 5 बजे तक पढ़ा दो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में. वेरी गुड. ठीक है बच्चे. वाह ये तो मजा आ गया. तुम लोग मजा आ रहा है तो वास्तव मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में. गुड.
वैलिड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोगों की थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है वॉइडेबल में। वैलिड और वॉइड के बीच में आ जाता है वॉइडेबल। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो एग्जाम्पल समझते हैं फिर बात करेंगे। लेट्स सी, लेट्स टेक द नेम ऑफ, मैं नाम दो बच्चों का नाम लेता हूँ। आई टेक द नेम ऑफ टू स्टूडेंट्स। लेट्स टेक साधना एंड और किसका लिया जाए, आशुतोष। ठीक है, Ashutosh, let's say Ashutosh is the interior designer, right? And Sadhana asked Ashutosh to make the interior of his house, of her house. And Ashutosh promised to complete by 31st December 2022. आशुतोष एक इंटीरियर डेकोरेटर है। साधना ने उसे अप्रोच किया कि सर आप हमारे यहाँ का मेरे घर का इंटीरियर तैयार कर दीजिए। और आशुतोष ने प्रॉमिस किया कि मैडम मैं आपको 31 दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, अब लेट्स सी, आशुतोष कुड नॉट कंप्लीट द वर्क अप टू 31st December, राइट? नाउ इट्स ऑन साधना whether to continue, whether to cancel, because time was there, time limitation was there in the contract, and Ashutosh could not complete the work in the time. Now ball is in the court of Sadhana whether she want to continue the contract or cancel the contract. So if Sadhana says okay, the contract is valid. If Sadhana says no, I don't want to continue with you because you have not completed the contract in time, the contract is void. So in between, the contract is voidable, that can be void. The contract which is not void but can be void is voidable, right? So contract is voidable at the part of sadhana. Sadhana can void the contract, right? The agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of others. To understand this language, you should understand the examples. Just a minute. A contract may be voidable in the following situations. यानी कि तीन सिचुएशन है, there are three situations, तीन सिचुएशन है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट voidable होता है। पहला, when the consent of the party is not free, फ्री नहीं है, there is pressure, coercion ध्यान है, physical torture, showing the gun. अब वही एग्जांपल लेते हैं, रिमेम्बर एक एग्जांपल याद करो यार, क्या एग्जांपल था कि मिस्टर मैंने ए से पूछा क्या तुम अपना एक्टिवा 5 रुपए में बेचोगे? ए ने कहा सर नहीं बेचूंगा। मैंने गन दिखाई उसे, उसने कहा सर ले लो 5 रुपए में। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके पार्ट वॉइडेबल है? ए के पार्ट। ए चाहे तो वॉइड कर सकता है, पर एक को लगता है छोड़ो यार कलेश कौन तुम्हारा लगाए, बिक गया 5 रुपए तो आए, तो वो वैलिड माना जाएगा, राइट बच्चों? तो पहली सिचुएशन when the consent is not free, the contract is voidable. Next point, see the example. A at the gunpoint asked B to sell his car for ₹100. B gave his consent. The contract is voidable at the option of the B because B has given the consent under the pressure, under the coercion, under the terror. Okay. Next, when a person promises to do something for another person, but the other person prevents him from performing the promise, the contract becomes voidable at the option of the first person. Before discussing, I am taking the example, see the example, then we will come on this point. There is a contract between A and B to sell car of A to B for 2 lakh rupees, but on due date of performance, A asked B that he does not want to sell his car. Here the contract is voidable at the option of the B. क्या है? A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। A ने कहा कि वो B को कार बेचेगा 2 लाख रुपए में, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक पर्टिकुलर डेट पर। लेट्स से कि वो कह रहा है कि मैं 1 दिसंबर को कार बेच दूंगा, आपको कार दे दूंगा और आप मुझे पैसे दे देना। कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया? आज की डेट में, आज की तारीख है 23 तारीख। बट 1 दिसंबर को
ए ने से बी से कहा भाई साहब मेरा मन नहीं है कार बेचने का, अच्छा नहीं लग रहा. नाउ बी विल डिसाइड whether to continue or whether to cancel. बी से नो आई वांट कार, मेरा तो एग्रीमेंट भाई, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ तुमसे, मैं सब लोगों को बता चुका हूँ मैं कार खरीद रहा हूँ. तो ए को बेचना पड़ेगा. मगर बी ने कहा अच्छा यार नहीं बेच रहा कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ, मत बेच. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया. यानी कि जब ए ने कहा वो बेचना नहीं चाह रहा है, मतलब ए उससे परफॉर्म नहीं करने दे रहा है बी को, उस केस में बी के पार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड. यानी कि बी चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकता है या कैंसिल. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2. व्हेन ए पर्सन promises to do something for another person but the other person prevents, एक परफॉर्म करना चाह रहा है दूसरा रोक रहा है, भाई मैं नहीं करने दूंगा परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट पहले पर्सन के पार्ट पर क्या हो जाएगा, वॉइड. When a person promises to do something for another person but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the. Clear है बच्चों मेरे? Third point. When a party to contract promised to perform a work within the specified time but could not perform within that time, the contract is voidable at the time of, at the option of the promise. एक ने परफॉर्म करने के लिए टाइम दिया पर टाइम पे नहीं कर पाया, दूसरा डिसाइड करेगा कि परफॉर्म होना है नहीं होना. जो अभी हमने एग्जांपल लिया आशुतोष एंड साधना को लेकर, तो वही एग्जांपल यहाँ पर देखिए. A agrees to construct a house for B up to 31st March 2021, but A could not complete the house on that date. Here the contract is voidable at the option of the B. A ने B से कहा भैया मैं 31 मार्च तक घर बना दूंगा, ए बना नहीं पाया, तो बी डिसाइड करेगा भैया करना काम कराना है कि नहीं कराना है. वो कहते नहीं भला मुझे आपसे काम नहीं कराना, आप तो कर ही नहीं पाते हो काम, टाइम पूरा हुआ ही नहीं, आप पूरे टाइम पे दे नहीं पाए, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, वॉइड. क्लियर? और क्या आ रहा है बच्चों, क्या क्वेरी आ रही है? What is the ceases to be enforceable by law? ceases मतलब not possible, not enforceable. ceases मतलब, तो ceases का हिंदी मीनिंग होता है रोकना, खत्म करना. तो could not be enforceable means ceases to be enforceable. Sir, can you please use English? बेटे मैं आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेज, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश, जस्ट रिपीटिंग, कोई एडिशनल नहीं पढ़ा रहा हूं बेटे. Bhavesh is asking same time I wait, every time I wait, but why God, I am not understanding what you want to say beta, please. voidable कॉन्ट्रैक्ट एक और बार बता सकते हैं? हाँ हाँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि voidable कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और void के बीच में फंसा हुआ है. एक आदमी सब सही कर रहा है, दूसरा फायदा उठा रहा है, तो जो पहला आदमी है वो डिसाइड करेगा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है या खत्म. मैं 3 बात बताई मैंने, आई हैव टोल्ड यू 3 थिंग्स. फर्स्ट, when the consent is affected by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, the contract is voidable. When one party wants to perform but other party stop to perform, then contract whether void or valid is to be decided by first person, that is voidable at the option of the first person. Third is when time is specified in the contract and contract could not be complete in that time, the party who is not in default can decide to avoid contract or continue the contract, right? Is a difference. I think you read yourself, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, जस्ट अ मोमेंट बच्चों, मैं एक प्रॉब्लम देख लूं, आपको क्वेरी कोई बची हो तो जो डिस्कस करनी है मुझे आपसे. गुनगुन बेटा, आई थिंक आई हैव डिस्कस अगेन द voidable concept.
First point again I have explained. बेटे अंशिका अंशिका इज आस्किंग सर जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कि कंटिन्यू करना है या नहीं तब तक वॉइडेबल रहेगा. यस ये कह सकते हैं पर वो है तो वैलिड ना. वॉइडेबल कोई टर्म नहीं है, वॉइडेबल क्वालिटी है. ठीक है, या तो वैलिड होगा या वॉइड होगा. तो वॉइडेबल मतलब इसको वॉइड किया जा सकता है पर वॉइड नहीं किया तो वैलिड ही है ना वो. Anjali is asking, sir, what is the easy definition of voidable? So, beta, easy definition means for voidable means voidable which is valid, but in this valid contract, a special quality that can be void by one party. एक कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है लेकिन एक पार्टी के पास राइट है उसे वॉइड करने का, दैट इज कॉल्ड वॉइड. और तीन कंडीशन में राइट होता है, या तो कंसेंट उसकी फ्री ना हो, या दूसरा आदमी का काम करने से रोक रहा हो, या उसने दूसरे आदमी ने टाइम पे काम नहीं किया. राइट सर, what is the difference between void and voidable? I think better make the you can read. ठीक है, लिखा है मैंने, सारा दिया हुआ है, आप एक बार रीड करोगे ना क्लियर हो जाएगा बेटे. Shivam is asking, sir, if A is selling and B is buying, okay, and B says that I will not buy the car, can A force him to buy the because of the contract, or is this voidable from A side? I think जो मुझे लग रहा है आप जो कहना चाह रहे हो बच्चे शिवम कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जिसमें A ने B को कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, B खरीदेगा. आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है, इट मींस A and B are under the contract in which A will sell the car to B. After that, B says, I will not buy the car. Whether A can enforce? Yes. Because that was not fault of A. A can enforce him to sell the car. Okay. आशुतोष सर आप मस्त समझाते हो, वाह, थैंक यू. Anjali sir, now it is crystal clear. Thank you so much, beta ji. Mr. Rajendra Mane is asking, if person B don't want to buy the car, then what happens? If the contract is entered, suppose the contract is already done between A and B, in which A will sell the car to B, right? अब B don't want to buy the car. The only remedy, only option to B is just request to A, and A will decide whether to continue or not. भैया A डिसाइड करेगा इस केस में, तो क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसे पूरा करना है, नहीं तो लॉ पूरा कराएगा. राइट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है बच्चे, आगे बढ़े. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. ऐसा काम, such a contract which is prohibited by law, that is illegal. So all illegal are void, but all voids are not illegal because there may be other reasons by which the contract becomes void. For example, A contract B to write the book for B, but A dies after writing 15 pages. So that is not illegal, but could not be performed. The contract is void. A ने B से कहा कि भैया मैं तुम्हारी किताब लिखूंगा, 15 पेज लिख पाया, एक की डेथ हो गई. अब ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल थोड़ी ना है, मर गया बेचारा, परफॉर्म कैसे करेगा? तो ये void तो है. इसलिए कहते हैं that all illegal are void, but all voids are not illegal. Clear? Contract that is immoral, immoral means bad character of contract, or opposed to public policy are illegal in nature. Are agree opposed to public policy क्या होता है sir? What is the meaning of opposed to public policy? Such a contract by which the public is harmed, that is harmful for public. Public को नुकसान होता हो जिससे वो contract कहते हैं against to public policy. Example 25.
R agrees with S to purchase the brown sugar. Brown sugar is drug. That is illegal, right? Contract to commit crime. Contract to commit crime is illegal, obviously. Unenforceable. An unenforceable contract where a contract is good in substance, everything is okay, but because of some technical defect in writing nahi hai, barred by limitation. So what is the barred by limitation? Just listen. As per the law, general law, अभी बहुत सारी चीजें हैं, but एक particular point के लिए, if a contract is made, for example, let's see, A has taken a loan from B. A has taken a loan from B, but A could not make the payment for 3 years, and B also not asked for payment. Now it becomes time bar. 3 साल निकल गए, A ने लोन लिया B से, और 3 साल तक ना तो A ने चुकाया ना B ने मांगा, तो वो क्या हो जाएगा? टाइम बार. अब वो क्लेम नहीं हो सकता लॉ. ठीक है. So where a contract is good, everything is okay, but because of some technical defects like absence in writing, barred by limitation, one or both the parties cannot sue upon it. It is described as unenforceable. इसको हम force नहीं कर सकते. For example, unsigned check. Let's take one more example. A bought goods from B in 2015, but no payment was made till 2019. That is 4 years. Now B cannot sue A for the payment in 2019 as it was crossed 3 years, and that is barred by Limitation Act. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by the Limitation Act. लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल तक उस पर काम कुछ भी नहीं हुआ, साइलेंट रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वो टाइम बार, राइट? The difference between void and illegal, I think you can read yourself. It is very easy. I have already discussed the concept. Now classification on the basis of formation. Express contract, ये पूरे डिस्कस करते हैं. कोई और क्वेरी तो नहीं है सबसे? Shivam, just like Twitter and Elon Musk, I'm not understanding what you want to ask, beta. Shivam. Mr. Raj Viswas, sir, does contract by coercion immoral, illegal? Please write in detail, but I'm not understanding what you want to ask. Aditya, sir, to make a voidable contract is in the hand of one party, but if we want to perform and other don't, is there nothing necessary by the other to perform or make it valid contract? Yes. If there is contract between A and B, A want to perform, but B does not want to perform, B has to perform because the contract has already been done, right? Tarun Sinha, Mr. Tarun Sinha. Sir, it becomes clear very easily. Okay, I like you very much. I like you too, beta. Varnika, sir, the time when contract is voidable, if any party get lost, can that party claim for damages? Who is at loss? Definitely. We will discuss in the lecture number 7. 7, 8 में डिस्कस करेंगे बेटे. ऋतु तिवारी, सर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट फिर से बता दीजिए बेटा. अनएनफोर्सेबल मतलब होता है कि एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ सही है, और कुछ माइनर मिस्टेक हो गई, जैसे साइन ही नहीं करे. कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में नहीं हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही है, लेकिन मतलब मान लो मैं इससे कोई पढ़ने आया, ठीक है, वो बच्चा कोई पढ़ने आया, उसने मुझे फीस दी, चेक से फीस में कहा चेक पेमेंट करना, चेक से दे दिया, और उसने मुझे चेक दे दिया, चेक पे सब कुछ लिखा, पेमेंट लिखा, नाम लिखा, लेकिन साइन नहीं करे. अब है तो चेक ही वो,
लेकिन क्या हुआ, साइन नहीं हुआ तो वो मैं क्लेम नहीं कर सकता उसे. दैट इज कॉल्ड अनएनफोर्सिबल. Sir, Pratima is asking, sir, all illegal contracts are void. Yes. Sir, Mrs. Kumari is asking, sir, what about economic classes? They are not in schedule. Definitely, you will get the schedule. This is schedule for first session. आपको मिल जाएगा बेटा, don't worry. Ashutosh is asking, some rest of all chapters coming from Indian Contract Act. Indian Contract Act with 6 chapters. I will discuss with you all the 6 chapters. Sir, suppose A and B enter in a contract. A said to B that write 100 pages of novel and B complete it. At the time of payment, A murder B. Then it is illegal. Contract कहाँ था बेटे? He, Abhishek, is asking, sir, there was a contract between A and B, and A is to write 100 pages of novel. Okay, A has done. Now B has done. At the time of payment, A has murdered the B, has killed the B. So it's an illegal act. Agreement का मर्डर करने का एग्रीमेंट थोड़ी ना हुआ था. ये तो मर्डर कर दिया, ये तो इलीगल एक्ट हो गया, मर्डर नहीं हुआ बेटे. ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? Sir, what about lending money and it crosses over the time for more than 3 years? That is time limited. Then will be unenforceable. You can say, you cannot claim. अगर 3 साल निकल गए तो वो claim नहीं कर सकते, right? Express contract. First, when it is by words spoken or written. बोल के या लिख के जो होगा, that is called express contract. A tells B on telephone that he offers to sell his house for rupees 2 lakhs. B in reply informs A that he has accepted the offer. This is an express contract, right? बहुत simple है. Implied, that is other than words for spoken or written, by action or conduct. See the examples. Coolie number 1. Let's see the example where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so. It is implied content and A must pay for the services of the coolie detailed by him. भाई आप स्टेशन से उतरे, कुली ने पकड़ लिया आपका बैग, आपने कहा ठीक है, the contract हो गया implied, right? You have to pay. Some more examples of implied contract. Enter into bus without asking anything from the bus conductor. Obtaining cash from ATM. Auction. You know auction. What is the auction? You know the auction. Bull nilami. IPL auction. You remember IPL auction? So auction complete. होता क्या है auction में? What actually happened in auction? The person who makes the auction is called auctioneer. बैठा होता है, he is just sitting, and the person in front of him takes the bid. तो जो highest bid होती है, that is the final point. And the suppose A, B, C, D, E, 5 persons are giving the bid. A says 100, B says 200, C says 250. D says 500 and E says nothing. The highest bid is 500. Then auction will do, okay, 501, 502, 503, done. Put the hammer at the box, at the table. It is called, the contract is accepted for 500. It's called auction. नीलामी में क्या होता है, एक आदमी बैठा होता है सामने, बाकी लोग बोली लगाते हैं चीज पर. एक ने कहा, ए ने कहा भैया 100 रुपए, बी ने कहा 200 रुपए, सी ने कहा 250 रुपए, डी ने कहा 500 रुपए, ई ने कुछ बोला ही नहीं. हाईएस्ट बिड कितनी आई? 500 रुपए.
500 रुपये ने कहा ओके, जो बैठा हुआ जिसको जो बेच रहा था, जो ऑक्शनियर था, उसने क्या कहा ओके 501, 502, 503, पुट द हैमर पुट किया, कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, इट्स कॉल्ड इम्प्लाइड। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, quasi contract means something which is not actually entered, something which is not actually entered. First we see the example, then we will come to the definition. A quasi contract is not created by word spoken or written or conduct of party, it is created by law under certain circumstances. This is the definition, but we first come to the example. पहले example पढ़ते हैं, then हम इस पे आएंगे. Example 32, obligation of finder of lost goods to return them to the true owner, or the liability of person to whom money is paid under mistake or to repay it back cannot be said to arise out of the contract. These are said to be the quasi contract. Now I am taking the practical example that was actually happened with me. I have ordered for wheat to the seller. And the order, I have ordered the 50 kg of wheat. The seller said that the hawker will deliver the wheat at your house. Okay, but wrongly, the wheat is delivered to my neighbor. मैंने गेहूं खरीदे 50 किलो और दुकानदार ने कहा भाई साहब हमारा जो हॉकर है ना वो आपके घर से डिलीवर कर देगा, राइट? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मेरे और दुकानदार के बीच में. द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्चुअली एंटर्ड बिटवीन मी एंड द शॉपकीपर, बट रॉन्गली, गलती से हॉकर ने वो गुड्स कहां रख दिया, कहां छोड़ दिया? मेरे नेबर के पास, वीट में उतार दिया और नेबर ने कंज्यूम भी कर लिया. नेबर हैज ऑलरेडी नेबर हैज कंज्यूम्ड द गुड्स. नाउ द contract was actually entered between me and the shopkeeper, but performed between shopkeeper and the neighbor, right? So whether I am liable to pay the price, the answer is no. Whether the neighbor is liable to pay the price, the answer is yes, but the contract was actually not entered. In this case, these type of contract are called quasi contract, which are not already entered, but due to performance, it becomes a quasi. मतलब जो पहले डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन बेटे जो परफॉर्मेंस हुआ उस वजह से उसको पेमेंट करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया. इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सी वन मोर एग्जांपल. Let's see, you find the mobile. Yeah, you find the mobile and on the road, and you find the original owner. But you have to find the original owner. You have to get the repair of that mobile, and it costs 200 rupees, right? आपको एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला जो आप ओरिजिनल ओनर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढने के लिए मोबाइल को सही करना पड़ेगा जिसमें 200 रुपए आपके खर्च हो गए. आपने you find the original owner and ask him to give 200 for the repair charges. The owner says, sir, there was no contract between you and me to pay to get the repair of the mobile. I will not pay. The answer is no. ओनर ने कहा कि भैया मेरे आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था रिपेयर कराने के लिए, आपने क्यों कराई? मैं तो नहीं कहा था आपसे, मैं 200 रुपए नहीं दूंगा. उन्होंने कहा नो, the contract was in condition that you have to find you, the person has to spend 200 rupees. That is the normal charges, and you have to pay. These are called the quasi contract. I think अब समझ में आ गया बच्चों quasi contract. आगे बढ़ते हैं. ई कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको एवरीबॉडी नोस. आई थिंक नीड नॉट टू डिस्कस. अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील. और कोई क्वेरी बच्चों? Raj Biswas is asking, sir, implied or tacit contract same? In my opinion, they are same. Tacit and implied are same in my opinion.
Sir, if Varnika is asking, sir, if already payment was done by you, then what would happen in the example of quasi contract? Let's see. She is asking, sir, if you paid the price of wheat, I can get the price back and never have to make the payment to the shopkeeper. Sir, what if Aditya is asking, sir, what if it is online payment? Will it be refunded? Yes, anytime. Because I am not liable to pay now. मेरे को तो परफॉर्मेंस मिली नहीं, I not get the performance, so I am not liable to pay. I will get my money back, and I can also claim the compensation if there is loss to me from the shopkeeper. मैं compensation भी claim कर सकता हूँ. Now on the basis of performance, executed contract, very simple. When both the parties have performed their obligations. Let's see. I have a contract with Mr. A that I will sell my car for rupees to Mr. A. I have given the car, he has made the payment, both the parties have made the performance, the contract become executed. जब दोनों पार्टियां अपना अपना काम पूरा कर देंगी तो उसे क्या कहलाएंगे? Executed. Let's see the example. Let's see the example. When a grocer sells a sugar on cash payment, right? It is an executed contract. Grocer ने sugar बेच दी, पैसा मिल गया, contract क्या हो गया? Executed. Because both the parties have done what they were to do under the contract. Executory. Executory, when both the parties have to perform. I have entered Mr. X to sell my car for 2 lakh rupees, right? Neither I have given the car nor he has given me payment. The both parties has to perform. This is called executory. This is called executive. C. Where G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next one, and H in consideration promised to pay G rupees 1,000 per month. This contract is executory because both things have to be done now. चांदनी सिंह सर टाइम अप. बेटा देख, मैंने तुझसे पहले ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, मुझे आज 5-10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगे तो अलाउ कर दियो, माफ कर दे बेटा मुझसे, ठीक है? चलो. अरे सर, दिस यूनिट इज रियली इजी. अरे एवरी होल लॉ इज वेरी इजी यार, डोंट वरी. नाउ unilateral or one-sided, it means one party has fulfilled and other party has to perform. Let's see the example. M advertises payment of award of rupees 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed a share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. भाई M ने एडवर्टाइज निकाला अखबार में कि मेरे बेटा खो गया है, तो जो ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपए दूंगा मैं. जैसे ही बी को बेटा मिला, बी का काम कंप्लीट हो गया, उसने बच्चे को ढूंढ लिया. अब किसके पार्ट पे रह गया? एम के पार्ट पे रह गया एम को परफॉर्म कर. तो बी के पार्ट पे तो एग्जीक्यूटेड हो गया और एम के पार्ट पर क्या है? एग्जीक्यूटरी परफॉर्म करना बाकी है. इसे हम क्या बोलेंगे? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट. Bilateral, both the parties have to perform. It is same like executory. दोनों पार्टी परफॉर्म करना है. It is called bilateral. So that is bilateral and executory are the same. Terms अलग है, नेम अलग है टर्म्स के, बट दोनों को मतलब सेम. A promised to sell his plot to B for rupees 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money and promised to pay the balance on next Sunday. Here the both have to perform their duties. Clear? तो जैसे टाइम पर सुपर ओवर, उससे पहले क्वेरी है आदित्य दर्शन. बेटा विच सर वंस अगेन विच टॉपिक बेटा प्लीज मेंशन करिए, कौन सा टॉपिक आपको समझना था? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. अंशिका sir explain quasi contract with some other example. Okay, let's see. You are the tenant in a flat.
right? And the electricity bill has to be paid by the owner, but owner does not come and on due date, and you pay the bill, because if you not pay the bill, there will be electric disconnection. भाई आप किसी फ्लैट में किराए पे रह रही हैं, बिजली का बिल ओनर को पे करना था, बिजली का बिल ओनर को पे करना था, लेकिन क्या हुआ भाई, ओनर आया ही नहीं ड्यू डेट पर, तो वो आपने पे कर दिया, क्योंकि अगर आपने पे नहीं किया तो आपने पे नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, पावर डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अब क्या आप क्लेम कर सकती हैं बिजली का बिल ओनर से, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, ओनर ने आपको ये तो नहीं कहा था भैया आप पे कर दो, फिर भी आपने पे किया, लॉ कहता है यस, बिकॉज आपने ओनर के बिहाफ पे किया जो उसे करना था, यू कैन क्लेम। दिस इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर द लैंडलॉर्ड, ठीक है। Tacit, I think, but the tacit and implied are the same thing, in my opinion. Aisha, sir, unilateral and bilateral are two different executory contract. In unilateral, one party has performed and other has to perform. But in bilateral, both the parties have to perform. ठीक है, चलो भैया शुरू करें। शौर्य का आगे सर प्लीज शुरू करो। ओके बच्चे मेरे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं सर, जल्दी से शुरू करो, जाके चाय पीनी है, बहुत देर से भूख लग रही है, 2 घंटे से आप पका रहे हो आप हमें। चलो भैया शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, voidable contract is one which can be enforced by aggrieved party। ध्यान से करना बच्चे, जल्दी नहीं करना, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। voidable contract is one which can be enforced by agreed party, can be enforced by both parties, cannot be enforced by both parties, none of the above। Second question, drawing cash from ATM is an example of express contract, implied contract, illegal, unlawful। Third, when the contract is perfectly valid in its substance but cannot be enforced because of the certain technical defects, this is an unilateral, bilateral, unenforceable or void। शिवम बेटा जी, आप बार बार एक सिंगल क्वेश्चन भेजते हो, सिंगल आंसर भेजते हो, आपको सारे क्वेश्चन सारे आंसर एक बार में भेजने हैं बेटा। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ पार्टीज, इंटेंशन नहीं थी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी, एग्जीक्यूटरी। साधना बेटा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आप चाह रही हैं, एक बार देखना। ओके, सी सेकंड हो गया, अब आ जाइए फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, where the obligation or promise in a contract is outstanding on the part of both parties, it is called, outstanding means pending, void, illegal, unilateral, bilateral। Next is one-sided contract in which only one party has to perform is promise or obligation, one party has to perform, void, illegal, unilateral or bilateral। स्टूडेंट्स प्लीज एक इंफॉर्मेशन है, लास्ट में मैं शेयर करूंगा आपसे, और जाना नहीं जब तक मैं नहीं कहूँ, ठीक है ना, बैठे रहना सामने, पाप लगाया कोई गया बीच में तो।
लेट डिस्कस द आंसर्स। पहले तुम भेजो यार, तुम लोग चीटिंग करते हो। देखो ये है ना समरी, ये मैं हर यूनिट के बाद समरी दूंगा आपको, ठीक है ना। ये उससे आपकी जो सुबह जैसे आप रिवीजन करा करो तो पहले ये पढ़ना, उसके बाद मेन टॉपिक, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है बच्चे। शुरू करते हैं, चलो भैया शुरू हो गए आंसर आने, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, voidable contract is one which can be enforced by the aggrieved party. Second, drawing cash implied. Third one, when the contract is perfectly valid and it is in substance but cannot be enforced because of some technical defects, is unenforceable. Next, without intention, quasi. Next, where the obligation of promise in the contract is outstanding on the part of both parties, bilateral. Next, is one-sided contract in which only one party has to perform its promise or obligation, unilateral. So this was the super over 2. Let's see. So first one who has given all the correct answer is Miss Anushka Jaiswal. Congratulations, beta ji. Second name is Miss Janvi Parekh. Congratulations. Next one is, third one is Miss Varnika. Congratulations, beta. And next one is Miss Ritika Gupta. Congratulations. And last name, fifth name is Sadhna Singh. Congratulations. All the five are girls. बच्चों लड़कों क्या कर रहे हो बॉयज? Congratulations everyone. Just give me 1 minute. This is the summary what we have discussed in the today's session. ये summary है बच्चों, और ये जब आप कल रिवाइज करें तो when you revise, please read the summary first, then you go to the main topics. In next class will be on Friday, ठीक है? But before the class, I will have the test, self-assessment test, in which I will ask 10 MCQs from the matter what we have discussed today. But before the test, I will again take the revision of today's class in fast track mode. ठीक है? तो पहले मैं रिवीजन कराऊंगा 10 मिनट, 5-10 मिनट जो भी लगेंगे रिवीजन करने में समरी से जो हमने आज पढ़ा है. उसके बाद टेस्ट होगा उसी का 10 क्वेश्चंस का. तो बी रेडी एंड आई विश कि ऑल ऑफ यू गेट
all the 10 आंसर करेक्ट। ठीक है, अब कोई क्वेरी रह गई बच्चे की? क्या रह गया? साधना, आपकी बेटा क्वेरी दिख नहीं रही मुझे, आपने कोई क्वेरी पूछी है शायद? Anshika is saying, sir, the question in which unforeseeable is answer, can the answer it can be void? No, बेटे, if some technical defects, तो जो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है, बेस्ट सुटेबल वो अनएनफोर्सेबल है, बिकॉज इट स्पेसिफिकली डिफाइन द टर्म अनएनफोर्सेबल, राइट? शिवम सर ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये गलत हुआ आपका। चांदनी आस्किंग, सर वी कैन मेक नोट्स, डेफिनेटली यू आर द क्वीन, आप जो चाहो कर सकती हो एग्जाम के लिए, तो आपको जो बेस्ट हो वो कर सकती हो बेटा। थैंक यू सो मच, अनुष्का कह रही है, थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग द क्लास इंटरेस्टिंग एंड लव द वे यू आर टीचिंग, थैंक यू। यानी कि आप लोग मुझे कह रहे हो सर अब जाओ पकाओगे क्या, थका दिया आपने। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड बी जाओ चाय पियो बढ़िया से, मेरे को भी चाय पीनी है, टाइम हो गया 4 बज गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।